Prabhupada gives a lecture in Nairobi University. So Prabhupada speaks, he's talking in a Nairobi University where he speaks about the soul. So Prabhupada Nairobi University में आत्मा के ऊपर ज्ञान देते हुए बात करते हैं. Prabhupada कहते हैं कि people who do not believe in the soul are the most unfortunate, they are in the most unfortunate condition. जो आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं, believe करते हैं, वो सबसे unfortunate है. They do not know where they came from and where they are going. They are unaware of their surroundings. Knowledge of the soul is the most important knowledge, but it is not discussed in any university. But what is the constitution of this body? What is the distinction between a dead body and a living body? Why is the body living? What is the condition of body and what is its value? No one is presently studying these questions. कोई नहीं ये जानता कि ये शरीर क्यों मिला है, ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या अंतर है, why is the body living, what is the condition of the body, what is its value. So but by this Krishna consciousness movement, Prabhupada कहते हैं कि कोई ये questions को study नहीं कर रहा, but through this movement, through preaching, we are trying to educate people so that they can understand that they are not these bodies, but they are spirit souls. So जिज्ञासा लाना भी, this is preaching. लोग जिज्ञासा में नहीं है, लोगों को कोई इस बारे में चिंता ही नहीं है कि वो इस संसार में आए हैं तो क्या करना है. So to awaken them, that is preaching. आप preaching के द्वारा subtle way में उनको awaken करते हो. So Prabhupada says here, the business of human life is different from the business of cats and dogs. That is our message. As far as the soul is concerned, the evolutionary process is going on, and we are struggling for existence, struggling to come to the point of eternal life. हम सब चाहते हैं कि हम कभी हमारी मृत्यु ना हो. हमें मृत्यु से भय है, मृत्यु से डर लगता है. We don't want to die. So Prabhupada says everybody is struggling for an eternal life, कि वो हमेशा जीवित रहे. That eternal life is possible, Prabhupada कहते हैं. If you try your best in this human form of life, your next life you will get a spiritual body. Your spiritual body is already within you and it will develop as soon as you become free from the contamination of this material existence. That spiritual body is already with you, it's within you. और उस spiritual body को आप emancipate, free कर सकते हो जब आप contamination से free होते हो, जब आप purified होते हो. Once we become purified, we can, हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं इस भौतिक देह से. That is the aim of human life. People do not know what actual self-interest is. It is to realize oneself, it is realize oneself. अपने कल हमने रात को किया था क्लास में कि realization is science. Knowledge जो है वो theory है, पर practical जो है वो है realization. जब हम इस theory पे काम करते हैं, when we work for the knowledge of the soul, that you will get a realization. सबको realization होता है. That is the science. So that is the aim of human life. That is to realize oneself, to realize I am part and parcel of God. And I have to return to the kingdom of God to join with God. So our aim in life is to return to the kingdom of God, to join God. भगवान के पास जाना और भगवान के सानिध्य में रहना. So हमें यही करना है. So we have to actually pray to the Lord to awaken us. Some are there जो सोना चाहते हैं और जागना नहीं चाहते. They don't get up in the morning because they want to sleep, still sleep. और कई पूरा जीवन ही सोना चाहते हैं कि वो कहते हैं हमें जगाओ ही मत. We are happy जैसे हम हैं. वो एक सुअर का जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं, like to live like cats and dogs rather than like to live like human beings. So human, अगर हमें human being की तरह जीना है तो हमें जागना चाहिए to know कि हमारा ये जीवन हमें मिला ही क्यों है. So that is the inquisitiveness. श्रील प्रभुपाद की जाए जिन्होंने सारी दुनिया को जगाया. उनका प्रयास क्या था कि सारी दुनिया जागे. और he started traveling. वो preach तो पूरा जीवन ही कर रहे थे, but he started traveling. How? At the age of like 69. जब हम लोग रिटायर होने का सोचते हैं 60s में, 50s, late 50s में हम रिटायर होने का सोचते हैं, he took it to travel all over the world. तो जो लोग नहीं जागना चाहते, they should go to sleep and they can switch off their phones, they can switch off, put them on silent and they can sleep. But those who want to awaken, they should try to be
the inquisitive souls, you know, हमें inquisitiveness में जीना चाहिए. भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं. सबसे पहले जो दुखी हैं, जो दूसरे जो जिन्हें कोई पीड़ा धन चाहिए, पहले दुखी, फिर धन चाहिए, फिर inquisitive, जो inquisitive है to know who God is. भगवान क्या है, आत्मा क्या है. And then he says जो ज्ञान, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वो मेरे पास आते हैं. और सबसे प्रिय वो है जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करते हैं. So ज्ञान के आधार पर realization, practically they work. So this is very important. हरि बोल. So प्रभुपाद की जाए, गुरु महाराज की जाए.